बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, कल हमने जो है 50 MCQs डिस्कस किए थे पास्ट पेपर्स के। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 51 से। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो बाद में लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर अमंग द मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स में से मेरा ख्याल है कि आप सबको याद होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर था वो कौन था? जॉन डन। जॉन डन के जो फॉलोअर्स थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते थे। नेक्स्ट हमारे पास, इंग्लिश सिविल वार वॉज फाउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, हु वॉज द लास्ट ग्रेट पोइट ऑफ द एज ऑफ रेनेसा। लास्ट ग्रेट पोइट जो था एज ऑफ रेनेसा का जॉन मिल्टन थे, ठीक है, जिसे हम मॉर्निंग स्टार ऑफ प्योरिटन एज कहते हैं। ओके, एंड इवनिंग स्टार ऑफ रेनेसा एज। ओके, एंड जॉन मिल्टन गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 40। द मोस्ट डोमिनेंट फिगर ऑफ द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज, मोस्ट डोमिनेंट फिगर जो थे रेस्टोरेशन एज के वो थे जॉन ड्राइडन, जिसे हम रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। द फर्स्ट एवर सिग्निफिकेंट फीमेल नावलिस्ट वॉज, फर्स्ट एवर सिग्निफिकेंट फीमेल नावलिस्ट जो थी वो थी एफ्रा बहन। द फर्स्ट ऑफिशियल और फॉर्मल पोइट लॉरिएट इज़ बिलीव्ड टू बी ही दैट इज़ कॉल्ड जॉन ड्राइडन, who introduced Alexandrine and triplet into English poetry for the first time. John Dryden introduced Alexandrine and triplet into English poetry for the first time. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, द एज ऑफ इनलाइटनमेंट विच स्टार्टेड इन 18th century इज आल्सो नोन एज एज ऑफ रीजन और अगस्टन एज। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंग्लिश पोइट इज मोस्ट डिस्कस्ड आफ्टर शेक्सपियर। रॉबर्ट बर्न्स इज मोस्ट डिस्कस्ड आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामाटिस्ट and Robert Burns is English poet. What is the meaning of the term magnum opus? Magnum opus means masterpiece. Just like prologue to the Canterbury Tales is magnum opus of Chaucer. Okay, which English poet was born with deformed feet? Lord Byron poet was born with deformed feet. Next हमारे पास, which drug did Samuel Taylor Coleridge used to take? That was opium. नेम द इंग्लिश पोइट हु गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 40। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जॉन मिल्टन। काइंडली बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो तभी कोई ना कोई जो है पीछे से आवाज़ें आने लग जाती हैं। सो विच आयरिश पोइट, ड्रामाटिस्ट एंड नॉवलिस्ट वॉज एक्यूज्ड ऑफ पॉन्स एंड सोडोमाइड? दैट वॉज ऑस्कर वाइल्ड। डेमोक्रेसी इज़ द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, हु सेड दिस? J.S. मिल ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी इज़ द bludgeoning of the people, for the people and by the people. Whose statement is this? This statement is given by Oscar Wilde. Due to which unique quality Oscar Wilde is so famous? Oscar Wilde is famous for hard-hitting quotations. Man can be destroyed but cannot be defeated. These words are taken from Old Man and the Sea. How Ernest Hemingway was died, he had killed himself or suicided. Gulliver's Travels is the magnum opus of Jonathan Swift, who is believed as the father of English literature. Geoffrey Chaucer is believed as the father of English literature. How many total series are there in the Canterbury Tales? There are 24 total series are in their Canterbury Tales. King James Bible, that was first ever Bible written in English language, published in 1611 में publish हुई थी। Renaissance movement is believed to be started first in 14th century in Italy. Who is credited to introduce sonnet in English literature? Thomas Waite is credited to introduce sonnet in English literature. तो सबसे पहले कौन सी सोनेट आई थी हमारे पास? इटालियन सोनेट। Who has written one of the all times best novel, War and Peace? Leo Tolstoy has written one of the best novels, War and Peace, like a Russian, he was a Russian novelist, Leo Tolstoy. Okay, next है हमारे पास, name the very famous French novelist who wrote Madame Bovary. That is Gustave Flaubert. How many total acts are in Shakespeare's comedy A Midsummer Night's Dream? That are 5 total acts.
in A Midsummer Night's Dream. Who is considered the most significant author after Shakespeare in English literature? That is called John Milton. Okay, I hope it's clear to all of you. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जाफरी चौसर जो थे वो क्या थे, या बाकी पोइट्स जो थे, ड्रामाटिस्ट कौन था, फादर ऑफ पोइट्री कौन था, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन था, ये सारे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।